Hello, good morning, students. I'm Professor Nancy Kansagra, and we are studying the subject cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग के पिछले सेशन में हमने देखा कि कुछ रिस्क एंड चैलेंजेस है, उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो विद द क्लाउड टेक्नोलॉजीज एंड उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो फॉर योर पर्पस की बिजनेस ग्रोथ के लिए है या पर्सनल यूज के लिए है। जिस भी पर्पस के लिए आप अपना क्लाउड का यूज कर रहे हो उसको कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। आज के सेशन में हम देखेंगे वर्चुअलाइजेशन ऑफ द कंप्यूटिंग। वर्चुअलाइजेशन इज द टेक्नोलॉजी टू जनरेट द virtual instance of the computer resources for multiple uses of the same physical resource. So जैसे कंसेप्ट है वर्चुअलाइजेशन, मतलब आप एक ही टेक्नोलॉजी का मल्टीपल रिसोर्सेज के साथ, फिजिकल रिसोर्सेज के साथ उसका यूज कैसे कर सकते हो उसके बारे में है। एंड डिफरेंट टाइप के वर्चुअलाइजेशन अवेलेबल है। सर्वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज जो अवेलेबल है वो विद द वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट क्या क्या कर सकते हैं। सर्वो वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्चुअलाइजेशन, विल सी इन फर्दर इन डिटेल कि वो आपको कैसे हेल्पफुल है। So the virtualization technology is known for the easy to set up and environment setup, cost optimization with the higher processing efficiency. When we are thinking about the business, at that time it is an obviously thing that we need our outcomes as soon as possible. It should be a cost optimized and that should give us the higher efficiency result. So in that, virtualization concept will help us a lot, and the virtualization environment share the actual resources component such as the memory, RAM, disk space and the network as a separate resource group, and it helps the organization to scale the computation resources depending on requirement. आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी करने देगा, आपकी डिस्क की स्पेस को वो उस तरीके से मैनेज करेगा, एंड बाकी के जो भी रिसोर्स ग्रुप्स है वो उनको भी मैनेज उस तरीके से करेगा, एंड यू कैन यूज योर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। एंड फॉर दैट हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट इट इज मैनेज थ्रू द हाइपरवाइजर। तो ये वर्क कैसे करता है? इफ देयर इज अ सिंगल फिजिकल मशीन विद द मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, मतलब आपका एक ही फिजिकल मशीन अवेलेबल है एंड मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स है। एट दैट टाइम लार्ज कंपनीज विद द dozens and even hundred of the servers use the server virtualization to increase their operating effectiveness and consolidate the number of the machine running. It can help the business by making it possible to maintain the fewer devices. क्या करेगा? आपका जो भी डिवाइसेस है उसको मेंटेन करने के लिए आपको हेल्प करेगा। उसके साथ साथ जो डिवाइसेस है उनको आपको बेटर वे में यूटिलाइज करने के लिए, आपको रिलायबल बैकअप एंड रिकवरी प्रोवाइड करने के लिए ये वो आपको सपोर्ट करेगा। एंड वंस यू यूज वर्चुअलाइज server is configured, you can configure the new virtual servers using the same configuration. So with the new virtual servers, we can do the same configuration, but multiple times. Okay, and several times it will help us to grow our business. तो इनके बेनिफिट्स क्या क्या है? तो बेनिफिट्स ये है कि फर्स्ट वो आपको स्पेस एज वेल एज द ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों को सेव करने का टाइम देगा। सेकंड, इजी टू मैनेज है, जो भी डेटा सेंटर्स अवेलेबल है उनको आप इजीली मैनेज कर सकते हो। इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द आईटी। अगर आईटी बिलोंग से कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है कि जो इसको यूज कर रहा है, ऑब्वियसली क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर, सो ज्यादातर ये आईटी फील्ड में यूज होगा। बट द थिंग इज कि राइट नाउ हर जगह पे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, कोई भी बिजनेस है। सो इन दैट टर्म्स अगर आईटी पर्सन इसका यूज कर रहे हैं, सो इट विल इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। इट हेल्प्स टू कंटिन्यू वर्किंग इफ द सिस्टम क्रैशेज और एनी सडन फेलियर्स। ट्रेडिशनल सिस्टम्स में क्या होता था, अगर इन केस अगर आपका वहां पे सिस्टम फेल हो जाता है, एट दैट टाइम वो कंटिन्यू वर्क नहीं कर पाता है और हमको उसको रिकवरी करना पड़ेगा। बट इन द वर्चुअलाइजेशन सिस्टम इट इज अ बेनिफिटेड कि अगर आपका सिस्टम क्रैश भी हो जाता है, सडनली फेल भी हो जाता है, बट इट स्टिल कंटिन्यू वर्किंग।
and application and resources are provided more quickly while using the virtualization. Here there are some type of the virtualizations. कौन से है? Hardware virtualization, application virtualization, server virtualization, storage virtualization, desktop virtualization and network virtualization. ये कुछ टाइप्स है वर्चुअलाइजेशन के जो अवेलेबल है एंड जिनका डे टू डे लाइफ में यूज भी होता है एंड इनके यूज की वजह से जो भी डेटा है उनको हम काफी इजीली मैनेज कर सकते हैं क्योंकि ये वर्चुअल सिस्टम के बेस्ड है एंड वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट यूज कर रहा है. we'll see further in detail कि ये जो वर्चुअलाइजेशंस है उसमें से कुछ वर्चुअलाइजेशंस कैसे हेल्पफुल है. तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये जो सारे वर्चुअलाइजेशंस अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है लाइक वर्चुअल सर्वर है, वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस है, virtual network है या तो even a virtual operating system for that matters. So for single resource of its type which appears as the server individual isolated resources or environments and the user can use them as a separate individual physical resource. And if we are using it for the different virtual machines on that it is running कि अलग अलग वर्चुअल मशीन्स पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस वो सिंगल फाइल सिंगल फिजिकल सर्वर्स का यूज कर रहे हैं एंड दैट इज बिकॉज कि वहां पे वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट एप्लीकेबल है ऑन दैट वर्चुअल मशीन एंड अगर वो कोई एक पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन क्रैश होता भी है तो बाकी की चीजों पे बाकी के सिस्टम पे बाकी की एप्लीकेशंस पे वहां पे अफेक्ट नहीं आएगा एंड ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर पा रहे हो थ्रू द वर्चुअलाइजेशन दैट इज आल्सो नोन एज एन हाइपरवाइजर and it is responsible for the decoupling of the hardware from the operating system and for allocating the necessary resources like processor, memory, storage, etc. And with the help of that, there are mainly two type of the hypervisors. First one is type 1 hypervisor and second one is type 2 hypervisor. And it is installed on the bare metal or directly on the top of the machine and itself acts as an operating system. ओके जो हम वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट अलग अलग चीजों में देखेंगे वहां पे आप कोरिलेट कर पाओगे कि ये वर्चुअलाइजेशन कैसे होता है जिसको हमने हाइपरवाइजर नाम दिया है और आप हाइपरवाइजर टाइप 1 यूज कर रहे हो या टाइप 2 यूज कर रहे हो दैट इज आल्सो डायरेक्टली वर्किंग एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. So what is virtualization in cloud computing? So we all know that how this is the cloud computing model works. अभी तक आपको पता चल गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है. सो जब भी कोई क्लाउड वेंडर फिजिकल रिसोर्स है जैसे कि सर्वर्स है, स्टोरेज डिवाइसेस है, नेटवर्क डिवाइसेस है या कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ऐसे है कि वो उसको क्लाउड पर रन कर रहे हैं एंड उसी टाइम पे फिजिकल रिसोर्सेज को वो रेंट भी कर रहे हैं. हाँ हालांकि कस्टमर एज पे पर बिजनेस मॉडल के थ्रू वो कर रहे हैं बट वो कर रहे हैं. सो उस टाइम पे दैट माइट बी एन ओवरहेड फॉर द क्लाउड वेंडर्स इफ दे आर रेंटिंग आउट द न्यू इंडिविजुअल फिजिकल रिसोर्सेज टू एवरी कस्टमर. सो इन दैट केस फिजिकल रिसोर्सेज जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड है उनको अगर आप हाइपरवाइजर्स के अप्रोच के साथ वहां पे फिट इन करते हो सो that virtualization would be a cool approach for the efficient utilization of the silos. A silo is a storage system for the bulk component. You can visualize that. And the cloud vendor can virtualize his single big servers to provide a small spec server to a multiple customers. Okay? तो अभी virtualization का cloud computing में रोल क्या है? सो जैसे जैसे आप एक्सपांड करते हो वैसे वैसे आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है. सो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ जब वर्चुअलाइजेशन एड ऑन होता है तो उसके जो एडवांटेजेस है वो क्या है कि वो स्केलिंग अप इजी कर देगा. पहले तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है या जिस भी पर्पस के लिए आप क्लाउड को यूज कर रहे हो उसका स्केलिंग अप कर रहा है, उसका सिक्योरिटी हाई कर रहा है, उसकी फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज को बढ़ा रहा है. तो उसके थ्रू आप इजीली वर्चुअलाइजेशन कर पाओगे. एंड अगर दूसरा कोई सर्वर की जरूरत भी है सो वो रैपिडली उसको क्रिएट करेगा
एंड उसको प्रिपेयर करेगा कि आप उसको इजीली यूज कर पाओ. एंड द अमाउंट ऑफ द मेमोरी एंड द कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड फॉर दैट वर्चुअल सर्वर आर वेरी इनकन्वीनियंट मोड एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, की आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कोई मनी देने की जरूरत नहीं है. So virtualizations form the core technology of the cloud computing business models. There are some type of the virtualizations available in cloud computing, like server virtualization, storage virtualization, operating system virtualization, and software virtualization. We'll see further about this virtualization types in detail in next session. If you have any doubts regarding this, you can put your question in below comment box. Thank you so much. Have a great day.